Good morning, everyone. I hope you guys are doing great. Welcome everyone for the morning session. And definitely, Anilji, another day, another battle. But if we see the market, कल के मुकाबले एक पॉजिटिव टू फ्लैटिश ओपन हुआ है, राइट? हमने कल का क्लोजिंग देखा था, राइट? इट वाज अ नेगेटिव क्लोजिंग एंड मार्केट में अच्छा खासा एक करेक्शन, नॉट करेक्शन बट थोड़ा सा बेटर ओपनिंग हुआ है, आई वुड से, फ्रॉम द लास्ट कम यस्टरडे, आई वुड से. सो लेट्स होप कि आज का दिन हमारा कैसा रहेगा एंड हमें कौन से कौन से डायरेक्शन में हमें प्ले करना है एंड कौन सा स्टॉक्स. एंड अगर हम देखने जाए तो आईसीआईसीआई एक थोड़ा अच्छा मोमेंटम दिख रहा है स्टॉक में, सो यू कैन डेफिनेटली have an eye on it for the ICICI Bank for the target of 1352. So this stock looks positive. अच्छा रिजल्ट भी आया था, इतनी वॉलेटिलिटी एंड हमें थोड़ा बेरिश मोमेंटम है, फिर भी ये स्टॉक का थोड़ा पॉजिटिव साइड दिख रहा है. So you can definitely keep your eye on ICICI Bank. And apart from that, Nikun sir is already here. He will definitely take give a walkthrough around the market, the entire outlook, कौन सी सेक्टर्स में अच्छा खासा मोमेंटम्स है. he'll talk about the stocks and later on we'll take our stock queries. and अगर हमें कोई आज ट्रेड बनता है, we will definitely share the same with you all guys. So let's wait for Nikun sir. And yes, we will also have the Sensex expiry today with the one and only our Sensex king Madhur sir. So stay tuned with us. And अगर हमें अभी कोई सेंसेक्स में अगर कोई ट्रेड दिखता है, कंसिडरिंग कि 300 350 पॉइंट एक पॉजिटिव ओपनिंग हुआ है सेंसेक्स में, अगर कोई हमें एक डायरेक्शन समझ रहा है, विल डेफिनेटली शेयर द ट्रेड एज वेल इफ वी फाइंड एनी पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी. सो निकुंज सर, कैन यू हियर मी? Yes, Avinash. Am I audible? Yes, you are audible. Your camera is. Yeah, just give me a minute. I'll share and then we are good to go. Sure. Yes, Nikunj sir, you are visible now. And So, over to you. If you're good to go, then you can start the session. yes, perfect. So, good morning, everyone. Welcome to the morning session. And आज निफ्टी इंडेक्स की अगर बात करें तो दो एक्सपायरी है. बिफोर कमिंग टू दैट विल स्टार्ट विद निफ्टी आउटलुक, जो बेंचमार्क इंडेक्स है जिसकी वीकली एक्सपायरी यूजुअली रहती है एवरी थर्सडे. सो निफ्टी की अगर बात करें, आज गैप अप ओपन होने के बाद भी ऊपर से थोड़ा सा एक करेक्टिव हुआ है. ऊपर में 23,000 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस पॉइंट का काम कर रहा है. कल का जो गैप डाउन था, दैट गैप एरिया वुड एक्ट एज एन इमीडिएट रेजिस्टेंस पॉइंट फॉर द टाइम बिंग. और 23,000 इमीडिएट रेजिस्टेंस है. नीचे में 22,700 के आसपास, 750 के आसपास सपोर्ट जोन है. इवन टुडे गैप अप ओपनिंग होने के बाद भी 22,970 का हाई करके ऑलमोस्ट वी आर डाउन 100 points from the opening highs. So a sell on pound stance, as we have been mentioning, it will continue, it should continue as of now, because there is heavy selling pressure from the FIIs and index is failing to even sustain at higher zones. even आज भी ऊपर से करेक्टिव हुआ है, तो ऊपर में इमीडिएट पॉइंट पे निफ्टी में 23,000 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस पॉइंट है. और फॉर द चेंज ऑफ ट्रेंड 23,450 और 23,500 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं आता, सेल ऑन बाउंस स्टैंड शुड कंटिन्यू इन निफ्टी. ऑल्दो and gradually the supports are shifting lower and so are the resistance point which are shifting lower. So previously 24,000 resistance point था, उधर से 23,500 और अभी 23,000 हो गया है. तो gradually as we go lower, the resistance and supports are shifting lower. नीचे में 22,700 एक इमीडिएट सपोर्ट है. अगर वो ब्रेक करता है तो 22,500 की डोर्स ओपन हो जाते हैं. निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो कल रिलेटिवली इट आउट परफॉर्म इन अ वे कि कम गिरा था, जबकि निफ्टी 300 पॉइंट लोअर था, बैंक निफ्टी 200 पॉइंट नीचे था. आज एज द आरबीआई हैज इंटरवीन एंड न्यूज बेस थोड़ा सा है, added some liquidity in the market which is very थोड़ा सा positive for banking and housing finance
companies. So which is why Bank Nifty is relatively outperforming. 1% ऊपर है, 48,500 के आसपास है. तो ऊपर में जब तक 49,000 एक नई हर्डल है, अगर वो जब तक ऊपर में 49,000 नहीं सरपास करता है, range bound trade to negative buy should continue. Although नीचे में एक टाइम के लिए 48,000 and 47,800 seems to be a lower base for Bank Nifty. तो एक रेंज में है, थोड़ा सा बायस थोड़ा सा नेगेटिव है, बट आज थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज के चक्कर में इंडेक्स इज अप. फॉलो अप अभी आता है तो वेल एंड गुड. 49,000 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है, ओनली देन वी कैन से दैट द फॉलो अप मोमेंटम विल बी बैक ऑन द पॉजिटिव साइड. एज ऑफ नाउ एक 1500 से 1000 पॉइंट के रेंज में है, ऊपर में 49,500, नीचे में 48,000. तो ये 1500 पॉइंट के रेंज में लास्ट ऑलमोस्ट 3 वीक से ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी. तो दिस व्हाट इज इट ब्रॉडर रेंज would continue and we have an event on the Saturday 1st Feb. तो budget एक major event रहेगा, तो which is why the volatility would be there. Even VIX has spiked to almost 18 levels. So 14 से 18 मूव आ गया है, तो which suggests that the swings would be there intraday. अगर पॉजिटिव है तो it could turn थोड़ा सा करेक्टिव मूव आ सकता है, again buying may come at lower levels. So a swing would be there, volatility would be there for this whole week because we have monthly expiry of the NSE instruments on Thursday and Saturday there is a budget and 30th को FOMC का meet है. So there's a lot of event lined up and which is why the fear index, that is India VIX, is up almost last 4-5 दिन में 14 से 18 हो गया है. So volatility would be there. So do be mindful of the stop losses and do trade with a strict stop loss. And if the stop loss gets hit, do take that and don't emotionally hold any long or short position in the market. आज जिसकी एक्सपायरी है, सेंसेक्स की एक्सपायरी है एंड बीकेएक्स की एक्सपायरी, दैट इज बैंकिंग इंडेक्स ऑफ दिस बीएसई. सो सेंसेक्स की अगर बात करें, सेंसेक्स में इमीडिएट अभी करंट मार्केट प्राइस है 75,700 के आसपास है एंड the VWAP for the weekly VWAP is 76,120 and we are almost 500-600 points lower than the weekly VWAP, and the monthly VWAP is 77,313. So we are almost roughly 2,000 points or 1,800 points from lower than the monthly VWAP. So which suggests that upside is capped. So sell on bounce as of now should continue in the Sensex. While BKX की अगर बात करें, BKX is the banking index of the BSE which is trading at 55,200 and उसका weekly VWAP is near 54,750 and we are above 300-400 points above the weekly VWAP, but the monthly VWAP is at 55,900 and we are 800 points lower than the monthly VWAP. So a mixed bias in BKX. So upside is capped but नीचे में एक support है. तो जब तक BKX की बात करें तो 54,900 एक immediate support point है and ऊपर में 55,350 and 400 are the resistance point, while Sensex में 75,700 CMP है, तो 76,000 is the immediate resistance point, while नीचे में 75,300 and 75,000 are the support zones for the आज की expiry per se. So levels we have shared with index outlook, we have given क्या resistance point है, क्या stance हमारा बना रहना चाहिए in both Nifty and Bank Nifty. Bank Nifty relatively better place है because ICICI Bank and the जो banking का liquidity push दिया है RBI ने, which is supportive to Bank Nifty. So which is why Bank Nifty is relatively outperforming the Nifty. And Nifty में जो IT है और दूसरे जो sector के stocks हैं which are थोड़ा सा लगाड़ है, which is why Nifty is relatively weaker than Bank Nifty. Bank Nifty as of now 48,500 के आसपास होल्ड कर रहा है, नीचे में 48,000 इमीडिएट सपोर्ट है, ऊपर में 49,000 इमीडिएट रेजिस्टेंस है. तो एक 1000 पॉइंट की रेंज है एंड इट शुड कंटिन्यू टू ऑसिलेट विद इन दिस रेंज फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ ट्रेडिंग सेशंस. सो I think we have shared the levels, we have shared the VWAP, weekly VWAP. आज की जो weekly expiry, monthly expiry है, Sensex and BKX दोनों के levels, support resistance we have shared, the VWAPs we have shared. So be mindful of the VWAPs. It works very well for the expiry per se. So and any quick trade setup रहेगा, तो we'll definitely intervene and tell.
As of now, I think एक stock idea जो है, that is as Avinash was rightly saying, is ICICI Bank. I think ICICI Bank should uh, continue this momentum because एक bottom out formation हो गया है near the 200-day exponential moving average of ICICI Bank, and नीचे में I think we have also initiated a CDI idea on ICICI Bank. I think we can look for a target towards 1280 or 1300 also in ICICI Bank. Gradually index stock है, so it will move 7-8% in a GP. So current market price पे buy कर सकते हैं, keeping a support of 1220 and look for 1300 1350 on the higher side in ICICI Bank. So gradual move in ICICI Bank. कल भी outperform किया था जब बैंक नीचे था, आज follow up buying आई है, and above 1255 the momentum should take the stock towards 1280 and 1300 on the higher side. So ICICI Bank is one stock which is looking very good on the chart, and even for higher time frame की बात करें तो weekly पे भी एक pattern बना है, and which is has bullish implications. So ऊपर में slow and steadily 1280 and 1300 के target के लिए you should definitely consider ICICI Bank as a buy for 1 week per se. And intraday में अगर कोई stock समझ में आता है तो I'll definitely share. I think banking and NBFCs are the flavor for. I think one stock we have shared, that is ICICI Bank, and there is one more stock which is our very favorite stock. So I think I'll quickly share the intraday trade on that, and then we can go ahead with some queries, and अगर कोई दूसरा opportunity रहेगा तो will definitely come across. So one stock that is looking decent for intraday per se is again Zomato. एक bottom out हो रहा है नीचे में 200 के support से. Intraday के लिए अगर कोई लेना चाहता है तो Zomato we should consider. Its current market price is 208. I think keeping a support of 202, look for 215 on the higher side for intraday trade. So one CDI idea on ICICI Bank we have shared with 1280 and 1300 के targets के लिए 1220 के support से. And Zomato is our intraday buy setup play, wherein keeping a support of 202 or 203, look for 212 and 215 on the higher side in Zomato. So two trade setups we have shared, index outlook we have shared the levels that you need to watch out for. So Avinash, I think if we have any queries, then we'll resolve few queries. We'll take few queries, so at least the participants who want their answers on the stocks that they have, जो कोई trade में फंसे हुए हैं, so we can definitely help them navigate that. Sure, sir. I'll just cover up. We have shared the Nifty support resistance, Bank Nifty support resistance, intraday for ICICI Bank and Zomato. The trades are pinned. You can check your comment section. And apart from that, today we have Sensex and Bankex expiry, if I'm not wrong, the monthly expiry. Yes. So let me just scroll up to the queries. Sir, your view on ITC hotels? ITC hotel is not listed as of now. 29th को list होगा. Okay. It's demerged from ITC, the parent company. So 29th को list होगा. So the indicative price of the what we are reading in the papers and all is 280 to 290 is the indicative price as of now. We don't know what price it will list. The listing is tomorrow, 29th. Sir, your view on Railtail? On Railtail. Railtail. Yeah. Okay. Yeah. So I think Railtail weak है और नीचे में 350 360 का एक सपोर्ट क्रूशियल सपोर्ट था वो ब्रेक कर दिया है. आई थिंक इट शुड कंटिन्यू लोअर. अगर आपका लास्ट सपोर्ट कम्स इन नियर 335 तो अगर वो भी ब्रेक करता है तो इट द स्टॉक कैन करेक्ट टुवर्ड्स 300 आल्सो. तो 335 का एक ऑलरेडी द स्टॉक हैज गिवन अ ब्रेकडाउन. सो आई थिंक बाउंस पे एग्जिट करना चाहिए. अगर 3 होल्ड करना है तो 335 का एक लास्ट फॉर द टाइमिंग सपोर्ट है. 335 अगर ब्रेक करता है तो स्टॉक कैन करेक्ट फर्दर. So be mindful of your stop losses. That is 335 should be your stop. अगर आपका long है, नहीं है तो wait for a better entry point towards 300. Good morning.
So your view on emphasis? Emphasis after the result has seen swings on both sides. I think on 25th it gained over 4.5%. The second yesterday it was down by 2.5%, and आज almost it is up by 1.5%. So एक range में है, नीचे में 1280 1290 is the immediate support, or 2920 अगर trading पर है तो 2920 के support 0.70 on the high side in emphasis. Sir, HDFC Bank. HDFC बैंक नीचे में as you can see चार्ट पे हमने सपोर्ट से 3 बार 1620 के आसपास से सपोर्ट किया है, 1620 to 1625. So immediate per se 1620 is very crucial for HDFC Bank. As you can see on the chart as well, the multiple supports और trend line support है. अगर 1620 break करेगा तो stock can correct further. आज थोड़ा सा पॉजिटिव है, बट वी नीड टू सी सम फॉलो अप एक्शन इन एचडीएफसी बैंक. जब तक ऊपर में ये स्विंग हाई विच इज 1687 1690 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस पॉइंट है, तो जब तक 1690 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है, आई थिंक इट शुड ऑसिलेट बिटवीन दिस 1690 टू 1620 लेवल्स. बट अगर 1620 ब्रेक करता है तो स्टॉक कैन करेक्ट फर्दर टुवर्ड्स 1580 एज वेल. So for the time being, 1620 should be your support and look for 1690 on the higher side. But comparatively, HDFC say better, ICICI is better placed. Post the result, it has seen very good formation on the charts, and even today it has seen some follow-up action. So HDFC say better hai ICICI Bank. So if you want to buy as a trading or even investment, I think ICICI is a better pick than HDFC Bank. So Suzlon quantity 3000 at 55.79. I think Suzlon has corrected अपने multiple supports break कर दिया है. जो 53 was very crucial और break करके almost 4860 आ गया है, तो the stock can correct further towards 47 4750. I think bounce पे एक बार अगर 52 के आसपास आता है तो you should exit from Suzlon, because लोअर लोस फॉर्मेशन हो रहा है, मल्टीपल सपोर्ट्स ब्रेक कर दिया है, एंड नीचे में आई थिंक 45 के टारगेट के लिए वेट करना चाहिए. आई थिंक सेल ऑन रैली और ऊपर 52 के आसपास बाउंस बैक आता है, आई थिंक यू शुड एग्जिट योर पोजीशन फ्रॉम Suzlon. So Bank of Baroda quantity 1000 at 222. Hold or exit? Bought है 222. 222. Okay, so I think आपके बाइंग प्राइस से ऑलमोस्ट 1.5 रुपीज ऊपर है, तो आई थिंक ट्रेडिंग पर से लिया है तो कीप अ सपोर्ट ऑफ 219 एंड होल्ड एंड लुक फॉर 229 ऑन द हायर साइड. आज बैंकिंग में थोड़ा सा एक करंट है, तो आई थिंक यू शुड वेट आउट, योर एंट्री पॉइंट इज डिसेंट, तो 219 के सपोर्ट से लुक फॉर 229 ऑन द हायर साइड इन बैंक. Sir, view on Chambal for today? आज के लिए 2-3 दिन से लोअर टॉप लो बॉटम ही बना रहा है, तो आई डोंट सी मेजर बाइंग के लिए कोई सेटअप ऐसा दिख नहीं रहा है. अगर इंट्राडे चार्ट पे भी इफ आई गो ऑन से अर्ली, सो एक बेरिश कैंडल ही है, तो आई डोंट थिंक एनी बाइंग अपॉर्चुनिटी एज ऑफ नाउ चंबल में है. नीचे में सपोर्ट के पास अगर आपको इंट्राडे सपोर्ट इज 460, तो आई थिंक 460 के पास आता है तो यू कैन टेक 1% का स्टॉप एंड लुक फॉर 8 to 10 रुपीज. बट एज ऑफ नाउ कोई बाई सेटअप है नहीं चंबल में, तो आई थिंक यू शुड अवॉइड, यू रादर बाई ICICI बैंक और Zomato that we have shared for intraday. So view on Fin Nifty? फिन निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को है, तो फिन निफ्टी इज प्रीटी सिमिलर टू बैंक निफ्टी. आई थिंक ओनली द कंपोजिट एंड वेटेज आर बिट डिफरेंट. फिन निफ्टी में जो बजाज ट्विंस है वो भी है, बैंक निफ्टी में वो नहीं है, तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्क्यू टुवर्ड्स
फाइनेंशियल सर्विसेज के आसपास स्क्यू करता है। तो मेजर वेटेज है HDFC, ICICI एंड बजाज ट्विंस। तो नीचे में फिन निफ्टी का एक सपोर्ट है 22,400 के आसपास एंड ऊपर में 22,900 का एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। जस्ट लाइक बैंक निफ्टी इट इज बीन ऑसिलेटिंग बिटवीन 1000 पॉइंट्स रेंज, ऊपर में 22,800, नीचे में 24, ऊपर में 22,800, नीचे में 22,350 के आसपास एक 700 पॉइंट की रेंज में ही है। कल ब्रेकडाउन देने की कोशिश की थी बट गैप डाउन हुआ था, बट रिकवरी आई थी। आज थोड़ा सा फॉलोअप है, बट जब तक ऊपर में 23,200 नहीं क्रॉस कर, कंटिन्यू इन फिन निफ्टी एज वेल। Sir, Kalyan Jewellers bought at 492, short term view. I think the stock So we 50 bought 50 at 4600. ओके 4600 ऑलमोस्ट आपके प्राइस से 1000 रुपीस नीचे है एंड द स्टॉक हैज गिवन अ फ्रेश ब्रेकडाउन ऑन द डेली स्केल एज वेल। आई थिंक इवन वीकली पे अपना प्रीवियस जो सपोर्ट था 3850 वो भी ब्रेक कर दिया है। तो आई थिंक द स्टॉक कैन करेक्ट फर्दर। आई थिंक ऊपर में अगर आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी टुवर्ड्स 3900 आता है तो यू शुड एग्जिट द ट्रेडिंग पोजीशन। The stock can correct further towards 3300 as well. So be mindful of your stop losses, as I always say. अगर trading position है तो please honor your stop losses. Don't get emotionally attached towards the trading position and convert them into investment. So ऊपर में 3900 आता है तो you should exit your position अगर आता है तो। I think as of now the setup seems that the stock is heading towards 3300 and 3250 on the lower side. Sir, why Anant Raj is falling? Is there any specific reason? I think Reliance has on the weekend it has announced that it has started. It is going to start a new data service. What do you say? Set up in one of their plants. So which is why जो उनके competitors है, they are seeing some negative reaction data. But that is Anant Raj and one more stock, if I'm not wrong, is listed. So Anant Raj is correcting because there is a major player coming who has more cash to burn in a business, so that will impact their business and it may take some revenue share in that business as well. So uske wajah se the stock is correcting. Sir, VPRPL for long term. Which stock? VRPL. I'm sorry, मेरे को नहीं आवाज आया आपका। Sir, Vishnu Prakash R Punglia Limited. Vishnu Prakash. Yeah. VPRPL, okay. Yes. Okay, so recently listed है तो कोई major history नहीं है। Last the stock 300 से 220 हो गया है तो I think it should और corrective move आ सकता है। I think correct towards 190, 195 as well. तो ऊपर में अगर 220, 240 के आसपास बाउंस बैक आता है तो you should consider liquidating your position in this stock. So we own Nykaa. तो नाइका एक रेंज में ही है, नीचे में 160 का सपोर्ट है, ऊपर में 170 का 172 के आसपास रेजिस्टेंस पॉइंट है। तो एक रेंज में ही है। ऊपर में जब तक 176 के ऊपर क्लोज नहीं आता तब तक कोई मेजर सेटअप नहीं है। तो वेट फॉर अ ब्रेकआउट अबव 176, ओनली देन यू कैन सी सम फॉलो अप मोमेंटम इन नाइका। नीचे में एक सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट है 163। अगर आपका लॉन्ग पोजीशन है तो 163 के सपोर्ट से होल्ड कीजिए एंड लुक फॉर 172, 175 ऑन द हाई साइड। The breakout will only come above 175, 176. So Reliance, buy or wait? In Reliance, you'd rather wait.
नीचे में 1200 के आस 1200 या 180 ट्रेडिंग पोजीशन के लिए अगर ले रहे ट्रेडिंग पर से तो वेट फॉर 1200 और 190 1195 can enter there with a stop of 1% and look for 2.5% अगर ट्रेडिंग के लिए ले रहे इन्वेस्टमेंट के लिए है तो आई थिंक यू शुड वेट फॉर अ बेटर एंट्री पॉइंट टुवर्ड्स 1150 1140 as well. I think one more trade setup I think intraday is looking weak is OFSS. So I think OFSS is one trade setup that is looking weak. तो अगर मैं इंट्राडे चार्ट भी खोलूं तो आई थिंक it is looking very weak. तो OFSS का एक future trade we have shared. Current market price is 9117 9190. So keeping a stop of 9280, you can look for target towards 9100 and 9020 as well. So एक short idea अगर जिसको करना है intraday पर से OFSS is that stop 9190 के आसपास future is trading, keeping a stop of 9290. Look for 9100 and 9050 on the lower side. So we have given two buy ideas, one sell idea. So we are also hedging our bets towards that. So even Nifty almost 140 120 points ऊपर open होने के बाद it's almost coming to flat terrain. Bank Nifty hold कर रहा है अपना gain mainly because of the news flows that RBI ने जो bond buying activity की है, which will push the further liquidity into the system, which is positive for banking and financial segment, which is why it is holding afloat as of now. 48,600 के आसपास Bank Nifty is holding. तो वो भी एक रेंज में ही है, नीचे में 48,000 is a support, 49,000 is a resistance point for the next 1-2 days. Relatively Nifty थोड़ा सा ज्यादा वीकर है. Yes, sir. I think we take one or two queries. Yeah, we'll take one more query and then, sir, we'll end the session. Sure. Sir, please explain RBI action. RBI, they've announced that they are going to buy 60,000 worth of bonds. So जब bond buying होती है तो it pushes more liquidity into the system, which is why जो rates है, it is like on a way of what do you say, थोड़ा सा ज़्यादा liquidity आया है, क्यों ही रहता है ना quantitative easing. So they have infused more liquidity into the system, which is why it is positive for the banking and the the NBFCs, small NBFCs, which is LIC Housing Finance, even for that matter L&T, LTFH, even for अगर interest rates में थोड़ा सा सुधार होता है, तो it is also positive. It has a positive effect on real estate and auto sector as well. So real estate में भी थोड़ी सी buying देखी गई है, तो which is why in a way they have infused some liquidity into the system, which pushes some needle towards the growth prospect. तो जो next RBI policy है, that will be very important to watch for. अगर कोई repo rate cut आता है तो that would be very interesting. And budget जो first Feb को है, that is also a major event. So event packed week है, so be mindful of your stop losses. I always say this, protecting capital is the most important thing. Trading है तो please on your stop losses be on the short side, on the long side. जो भी है, please trade carefully. Volatility would be there because VIX has spiked to 18 levels. So the plus positive swings, negative swings would be there throughout the week. So guys, that will be all for the morning session. Thank you everyone for joining in. We have shared the trades, comments are visible here. Oh, please check it out before we end the session. And today we have the monthly expiry. So don't forget to join in at 2:30 p.m. with our experts. That will be all. Thanks a lot everyone. Thank you, Nikhil sir. Thank you. Have a good day.